Yeah, so very good morning to all. Shall we start? Good morning, sir. Morning, Poonam. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, Kuldeep ji. So, everybody, please start your interface. And we are about to start all the regression algorithms. Yesterday, we did Docker and other activities. So, everybody, start your Docker. And I hope now everybody is comfortable with Dockers. And I hope you downloaded the Docker for R language as well as now Python, your notebook for data science, right? Where we can easily work for ML and AI. So I'm just going to share my screen. But meanwhile, you also start your screens and we're going to start practicals, right? And today we are going to discuss. Yesterday we discussed about linear regression and many other regressions are there. So we're going to work on it, right? So quickly start your सर थोड़ा uh, बताएंगे कि इमिग्रेशन होता क्या है? हाँ मैंने कल बताया था, आज मैं दोबारा अभी शुरू करता हूँ तो बता देता हूँ, ठीक है जी. हाँ, yesterday we discussed but I'll share it today as well, don't worry. ठीक है जी. बट मीन वाइल अपना अपना सिस्टम ऑन कर लीजिए, प्रैक्टिकल्स बस शुरू करने लगे हम. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और सब आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. So in the previous session, we have discussed about the topic regression. Now, I'll repeat what is regression and how we have to pursue the regression. See, regression is one of the uh, best algorithms and almost used for mostly in the research work, especially once we are going to talk about the prediction analysis. We need to identify some missing values where you have some patterns, right? So what are these patterns and all about? I'll just quickly show you. You know how to start and where is the code. So I refer earlier also I refer the same, that is w3schools.com. So you can just go through and check. There is a concept of regression, right? In machine learning model, you will find this link called a linear regression. Just go and click to this link. I hope my screen is visible to all, right? So what all you need to do, just open this link and take a look. There we have the concepts of relationship model. Now what is relationship model at this regression, and what is the relationship in between the concepts of regression? So term regression means what? We are trying to identify the relationship between two different variables. The two major variables, like we can take x and y coordinates. So if generally you might have seen, like if x is increasing or either way, ascending or descending, but in that way there is a pattern you identified, that the value of y also being based on it. So in this case, there are many different things which we can analyze. The first, the prediction analysis. Second, we can use for missing values details. Third, we can also go for outlier identifications. Now, what are outliers? Outliers are the concepts where it actually it gives you an impact on your the analytical or statistical results. Before you get into the linear regression, please make sure that you are already through with the there is a precision values, recall values, standard deviation values. So you must be aware of these values, okay? And if you are already aware of these things, otherwise you can go through separately. What is standard deviation? Under standard deviation you will find the variance, because standard deviation is nothing but you know, it's based on variance. So you can find how to calculate the variance and precision values, and based on it, even there is one more value called z score values we need to calculate, right? This is how we people are doing in the terms of research. And
Based on that, we can able to identify what are the slopes, how we can identify the value of slope, and various other variables are there. So why it is all required? Because we are going to talk about the analytical results. So you can take a look, just take a look. I hope my screen is visible to all, right? Screen is visible, na? Yeah, perfect. So in this case, you can see the linear regression. Now it's a nothing but the relationship. How we can find the relationship? We need to create a slope values. So we need to create this slope sort of and intercepted points over there. The most intercepted point is more relevant to the slope or nearby to that. So that standard deviation also gives you the values and we can able to calculate it. So just take a look. There is a library in case of Python. Let's suppose we'll have an example. Say we have x-axis representing the value of age. Okay. And we have y-axis where we are talking about speed. So it means we are talking about some vehicles where on vehicles we are talking about the age of the vehicle and the speed being presented by those vehicles. So is there any relationship between the speed and the age of the cars or any other way? So it has been registered that the age and the speed, so we have some 13 good values, so of 13 cars. So at the bottom you can find in x-axis we have the age. Say any one of the first car is for 5 years old, and let's suppose the speed for this car is 99 kilometers per hour. Okay, so it has been identified. This is not like you can't drive more or less, but it is being identified on a very specific location. That might be some toll booth. Okay, so if you are on a particular toll booth, like is there anything relevant to the age factor with the speed factor? So we are just trying to identify any relationship in between them or not, right? In this way, means these might be a two different variables, and you will say, sir, hardly matters the car is old or less. If the driver is good, they can drive like anything. So probably this is what your perception. But let's say, can we identify any two variables have any relationship in between them or not? So probably they are not related, or they are most likely related, right? So this is what the purpose of regression, where we are supposed to identify the relational models and we need to identify the values which are correlevant to each another, right? So for that, because we have to define the plots, so already you have gone through with the matplots, matplotlib and all the different types of plots, especially scatter plots and plotting part, and histograms, pie charts, bar graph. Okay, you must go through with the these all the graphs, how you can pursue in the Python. So I hope you all must have gone through with all these values. So just get into it, do these values, just place these values. So we just took a constant values, right, in the x and y, and simply, so we import the plotter matplot library. So we use the class pyplot, prepare the object called plt. Then we have x coordinate and we have y coordinate, and then we are going to plot it. So plot the scatter plot, passing the value x and y in it, and finally show that plot, right? Finally just present that plot. Okay, and finally what you will identify, something like this kind of relevant values would be there, where you have x-axis and you have y-axis, and we are trying to plot those points, intercepted points of x and y, depending upon the data. So we have some data and we got some points. Now we need to identify the slope in between. What is the best value of slope? Because finally, even we want to go for the prediction analysis. So how we are going to predict the values? So for predictions,
let's say, just take a look how we first of all design the slope. Now it is very basic that we did a mat plotting on it, but now we are using another library called SkyPy. So in this SkyPy, we create a object like import your stats, right? So stats is another object which we are supposed to call. It's a class. Okay. So under that, we are again going to pass these values. Now, what we are supposed to do, see in Python, it is quite easy to go, but only the purpose. If you know the purpose, then it is really good to go, because you know the purpose why we are doing all these things. To implement in Python, it is quite easy. It's not a difficult task. Okay, so all what we need to do, we need to place the values, let's say X and Y again. And in these values, we are supposed to pass basically this method. There is a method in the class called stats. The method is len regress. So it's a linear regression. We are still on the linear regression. So we have a method called len regress, and passing both the list of X and Y, right, before we go for a plotting and all. So what we are supposed to do now, we are going to identify the statistics. So this is the method which generates the value, the statistical analysis being committed on these two values, and it generates multiple variables. Like you will get the value called slope variable, you will get the intercept value, you will get R, right? R P. So what is R is basically you as I told you that it's uh, one is P for precision and R is for recall values, and we also get the standard deviation error. So in case if there is any error, so what is the error values in between? So this is R is recall value, P is precision values. Okay, and then standard deviation error. So standard errors in case if it is being identified. So we will find out these multiple variables from this statistical function called len regress. Okay, now on that basis, all the values of from the slope and intercept is there. Accordingly, we need to define, let's say, one function called my function, and we are just going to pass the value of X, because in this X we are supposed to return, which is nothing but the multiplication of the slope into X plus interception value. So how you can find the slope values and all, where you are going to place these values, that is the slope value which you have been identified, multiply by X plus intercept value. So it creates a new point for you, which will get a return. And how we are using it, so in other way, we are going to create a model, because in machine learning, every time, remember, we are supposed to create the models. Okay, the values must be in the form of model. So we create a model like a variable like my model is equals to, and you have to prepare the list. Okay, so we are converting all the data into the form of list. And what is that list? We are supposed to map the values. Now instead of X and Y, you already have X and Y. Now we have the slope values which are being calculated by this function. So we'll take that function comma X as a coordinator. So we are going to generate another model values for the value of Y, because X is always there. X is always called as the independent variables. Remember that. Y is always the varying, dependent variables. So if X is always the independent variable, it means these are all the constant values, and on base of these values, the varying values, the changeable values are somewhere in the Y variables. All right, this is how it works. So we got a model, and in this model, we try to plot it now on scatter chart. So we are plotting on the scatter chart. Now, how we are plotting, you got a value of my model. So you place a scatter chart where you are just passing values of X and Y. And afterwards, you are going to make a plotting, where plotting is on the value of X, comma, not Y. It's on the return value of your model number. So that is slope into X plus interception point. And then further show the plot.
and finally you will get the result something like that. The first result is same like which is there, and on the second one you will find the slope values which is going to plot all the points, and you will get all the values. This is what the value you will find, and you will get a slope values. So this is a very simple but quite good code which you need to understand. The code is already available in W3 School, so I'm just using a very simple code for you. It's a very simple code. For more details, now you have to go through for regression in your exams as well, for theory, for even if there is any practical. So for that, or implementation, or trying to analyze any data in your organization wherever you are working, or any type of data where you supposed to make some analytical results. So on that basis we are going to go and get into that and collect the data. So everything is nothing but it is a data, right? Everything is what is just a data. So make sure your data must be relevant and accurate. If your data is inaccurate, you will find the outliers. Like, I'll show you some outliers. Wait, see, now in this case, if you just see this graph, this is my slope which is being identified. So the values which are very near to this slope, this point is the most likely following the pattern of this regression, linear regression being identified. But in this case we also identified one of the value which is very far off, another one value which is very far off. So these two values, these 2 points are not following the pattern and have many big errors. So this is the standard errors which we identified, that how far the values are there from the slope points, right? If it is on the line, nearby line, makes sense. So there is a threshold values between like these standard deviation values, that how far between these lines. And let's say these are little far off, so they have error. This is with some error. This is more likely to be following the pattern. So we try to identify the pattern by using the myfunc method and to generate the slope. So there we find the pattern values, and pattern values need to be identified whether really all the values are relevant to that or not. This kind of thing we can go for even Sensex, Nifty, or any share predictions. So you can take last 5 years values, whatever the value and at what time it was the value. Accordingly you can generate the pattern. You will find the pattern whether the values are relevant to that or not. And that is what, like, you might have seen. Obviously they use a different graph, but we can identify is there any value which is more relevant to that pattern or not, and whether that value increase to the slope or less than to that slope. तो हम लोग निकालते हैं ना उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यूज, उसमें भी निकलती हैं स्टॉप लॉसेस जिसे आप बोलते हैं, है ना? In your share market, what is my stop loss or stop gain values, right? So we need to calculate those values, because we should understand there is a pattern. Always there is a pattern, and if anything is going beyond the pattern, then probably this method won't work, or your values are outliers which could be uh, uh, because of dilemma, like war, or some sentiments, or some any good information or news in their companies. So you will find some outliers, and you can identify what is the impact, what is the reason why there is an outlier. So that is the area of concern which we need to figure it out, and on that basis you can closely monitor your activities. So anything we can do by using these values. Only what we want the values and accurate values. So in case you have accurate values, you can go for prediction analysis or missing values. Now missing values in the sense, let's say I have this data, and in this data you can see 5, 7, 8, okay, let's say 10 is missing. So if we have a relevant data, once the age was 5, the speed was 99. Once the age was 9, the speed was somewhere either 86
or 85, you can see one more 9 is there. So 85 or 86 being recorded. But what happened if the value, if the, where we can say, let's say for 10, the point is missing. So in this case, you can see the 10, for the point number 10, the point is missing. Okay, we don't have any value for point 10. Now in such cases, how you will manage, how you will identify? So can we identify the missing values as well? Yes, you can. For that, simply we can go through with the uh, options. These are the methods and all the explanations are there. Please go through with these explanations. You can find the details, right? And simply you have to show. So all the complete details being mentioned. So this is for your Python code. And in 229, in your 229 data science, this is for 228 machine learning, right? And same thing if you want to do it in your MSCL 229, in 229 you have to follow the R language. So you have to go through with the R language. So yesterday I told you how to go and deploy your Dockers. We did practicals on it, and I hope you must have deployed your R language, right? So you got a Docker for R language. So in R language, the R value range is varying from -1 to 0 to 1, where 0 means no relationship. So there we are talking about the relationship. Can we identify the relationship? R for relationship. What is relationship? Okay, so you will find, I will give you the code also for R language separately. R is basically for the relationship. Okay, in this R value, so there are many values. Now you must have seen there, you have R value, there we have R value, right? This is this R value all about. Okay, so we can find the relationship model of R value. Now R value means if the value of R always lies between -1 to 1, where 0 means no relationship, 1 means it's positive, minus means negative, means 100% related. Okay, relevant to that, wherever the direction is about to. So the SkyPy module will also able to calculate your feeds, and based on that you can get the X and Y values. So same slope, same, you can identify the R value, print value, okay, or P value, precision value, in the same pattern. So the value of R, once you run, let's say we'll run this, I will show you, I think then you will understand the code. So we got the value that is -0.75. If it is -0.758, so 76, let's say. So if this is -0.76, so what does it mean? It means it is very near to -1 or 1, right? So in this way, you got this value. That means there is a relationship. That is more likely to be that there is a relationship. So how you can find the concepts of relationships? सच में ये दो वैल्यूज, दो डेटा सेट जो है रिलेटेड है एक दूसरे के या नहीं? So basically we'll see the relationship models and we'll try to identify the relationship models in this, right? So the value, if the value between these values are -0.76, it means it is related. अगर ये 0 towards 0 होता, it means no relationship. And you also find the errors. कितना error है? 1 पूरा नहीं है, it's not completely 1 or -1, right? So it means there must be along with the errors. तो इसकी level of accuracy क्या आएगी? relationship कितना परसेंट है? 76% relationship है इसमें, right? This is the way how you can identify. यानी ये जो डेटा आया है इसका परसेंटेज कितना है, रिलेशनशिप परसेंटेज कितना है? That is only 76%. Understood? And why it is so? Because of ये आउटलेयर्स, ये जो आउटलेयर्स आए हुए ना, इन्होंने एरर्स ज्यादा जनरेट किया है. इफ यू हैव मोर आउटलेयर्स, अगर आप ये ट्राई करके देखना, यू ट्राई टू रिमूव दीज वैल्यूज, ये जो आउटलेयर्स वाली वैल्यूज है, यू विल फाइंड मोर रेलेवेंट और मोर नियर बाय रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप की एक्यूरेसी कैसे निकलेगी? अगर वो 90, 95, 96, 98% एक्यूरेट है, तो -0.98 या 0.98 या 96 आ रहा है, so it's more likely, more related to each another.
बट क्या एज और स्पीड का कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? इज देयर एनी रिलेशनशिप? सो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप? ये वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप मैटर करता है. So it is almost 76% relevant towards the negative side. Towards the negative side. आप देख भी पा रहे हो ऊपर वैल्यूज नहीं है, ज्यादा वैल्यूज नीचे हैं from the slope. So it is always towards the negative side. Right? Is that clear? किस तरह से ये निकालना होता है? Okay. So this is the way how you can find the R value and you can print that R value. उसी में ही आ गया ना, ये तो मेथड हमने रन किया ही था. So for each variable you can try to print their data. So try to print what is exactly there. आप print सिर्फ slope, intercept value, R, P, error values सब आप print कर सकते हो. So you can find on that basis. Right. So prediction करने के लिए हमने my function use किया था. राइट, हाउ यू कैन प्रेडिक्ट. सो प्रेडिक्शन क्या होगा? अगर 10 ईयर वाली कार है या मिसिंग वैल्यू है, या वी वांट टू प्रेडिक्ट द वैल्यू फॉर 10 इयर्स एज कार, तो उसमें क्या करेंगे? आप एक्स आपका लेट्स से 10 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू उसमें इंपोज करेंगे, वैल्यू पास करेंगे. लेट्स से मैंने फंक्शन में डाल दिया 10, तो उसकी एक स्पीड आ जाएगी, जो स्पीड आएगी वो प्रिंट कर दीजिए. तो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द स्लोप वैल्यू फॉर 10, which is somewhere 86-87 के आसपास ही आएगी. क्यों 86-87 आया? यानी आंसर ठीक आ रहा है. Why? Because आप ध्यान से देखिए 9 के लिए भी नियर बाय 86 था, 9 के लिए एक 85 था. ठीक है, सो इट इज वेरी नियर टू ईच अनदर एंड बेस्ड ऑन दैट. और ये कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. सो देयर इज अ मेथड, right? So we use this method for prediction analysis. So we got a predicted values for 10. We have to pass it 10 and we will get the speed. अगर ये सारा डेटा सेट होता तो 10 के लिए, है ना, where the value of x is 10, then what would be the value on the y side? Because the y side is varying and x side is independent variables, and this you can take it as a constant values. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा सेट. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई. इसका एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा बनता है? ये वाला. अगर एक्यूरेट वैल्यू आएगी तो उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू ये होना चाहिए जो स्लोप पे इंटरसेप्ट भी करेगा एंड वी विल गेट द कंप्लीट पॉइंट ऑन इट. ठीक है जी, इज दैट क्लियर? सो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा जब आप रन करेंगे, दैट इज 85.6 आना चाहिए. सो 85.6 आना चाहिए. ये अभी हमने रैंडमली पढ़ा, बट वंस यू रियली कैलकुलेट एंड रन, बस सिंपल रन ही तो करना है, and you will get a proper value where somewhere it is 85.6. So if you got the value like 85.6, means you can able to predict or identify the missing values. Function same है. अंडरस्टूड? तो अभी आप ये कहते हो सर फिर इस पूरे डेटा सेट के बाद व्हाट अबाउट 15? तो 15 का कौन कैलकुलेट करेगा? कि लेट्स से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. if the value of x is 15, then can you predict what would be the value? Can you predict for 12 already है, 13, 14, 15, 17 है, उसके बाद फिर 16 मिसिंग है, 16. so can we predict? राइट, तो आपको करना कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू मेक द वैल्यू चेंजेस इन द फंक्शन. आपको सिर्फ इनपुट उसका आर्ग्यूमेंट में वैल्यू चेंज करना है. यू विल गेट द प्रेडिक्टेड वैल्यू बाय यूजिंग दिस मेथड. सो अंडरस्टूड हाउ वी कैलकुलेट द फंक्शन, how we able to analyze the predictions or missing values from the existing data set. तो always remember data science में अब यही काम आपको R लैंग्वेज में भी करना है. देखिए R के साथ ना कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना. हम रिकॉल वैल्यूज यूज करते हैं रिसर्च में, हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं इसमें रिग्रेशंस में, है ना, एंड पाइथन में. तो लैंग्वेजेस अलग है. R इज द वन ऑफ द लैंग्वेज. तो यही काम अगर आपको R लैंग्वेज में करना है, सो व्हाट ऑल यू नीड टू डू, लाइक आपको बोला 229 के अंदर आपका R लैंग्वेज है. सो लेट्स से लीनियर रिग्रेशन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया इन पाइथन किया ना, इन R लिखना अलग से. सो R प्रोग्रामिंग में यू विल फाइंड द
कंप्लीट कोड, यही पाइथन का कोड है, और आपका 2 to 9 में यू हैव अ आर लैंग्वेज. Okay, you have a R language, so you can try with Geek for Geek, or you can try again W3 schools में भी आपको वैसे तो R मिलता है. So either you can try what is R language, how to proceed and work with R language. बहुत आसान है, मतलब the code is not a difficult part because already the methods were predefined, pre-designed. सब कुछ पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है. मतलब आप समझे प्रोग्रामिंग पता क्या है. इफ यू हैव अ फियर फैक्टर विद द प्रोग्रामिंग, देन प्लीज डोंट गेट इनटू इट. ठीक है, आई विल गिव यू द वे हाउ यू कैन कम आउट ऑफ द प्रोग्रामिंग फियर एंड ऑल. The best part is, in case of today's programming, you try to divide your program part into 4 major areas. The first area is, even you want to note down, you can note down. The first most part is import your library, जिसमें आपके relevant library, जिसमें आपके functions हैं और आपको जो भी काम करना है उससे relevant, you need to download that library. So first you download that library. Second, collect your data. Where you have the data, probably your data in the some text files, in some folders, in some array, in aggregation you want, you have to collect the data from multiple resources. So collect your data, transform your data, collect your data. So second part is more likely that you have to work more on data. It must be accurate data. So accuracy नहीं है तो एक मॉड्यूल बना के ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एग्रीगेशन एंड मेनी अदर मेथड you can apply. So that is, your data must be accurate. So once you get the accurate data, place it in some like list or such kind of variables and all, or collection variables, right? Array, list, किसी में भी tuples, जैसा आपको जो use कर रहे हो language. Once you get the data, so first is your import your headers in libraries. Second is your perform the process part of data collection. So work on data collection and make sure your data must be aggregated and transformed and accurate, normalized data. ठीक है, ये हर एक वर्ड का मतलब है अलग अलग. So you get a normalized data, and once you have the data, third option is process that data. So simply now what you have to do, you have to go and process your data. So once you process your data, जैसे आप डेटा प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग करके क्या होगा, इट मींस वी नीड मेथड. तो जो लाइब्रेरीज यूज की थी, लाइब्रेरीज में देयर मस्ट बी सम मेथड, सम क्लासेस बाय व्हिच you need to pass your values as a parameters, right, as an argument in those functions, and that function will automatically perform. You need not to create those function, it is created or pre-designed. So just you need to place that data into it as arguments in those functions. The function will perform that task and generate the output. So the third option is you are supposed to process your data as per the functions, whatever is need to be evaluated. And once it is done, then fourth part is, once it is processed, obviously it generates some output. जब आप डेटा प्रोसेस करेंगे, it generates some output. So collect that output. Once you collected that output, and next and last option is print or generate your outputs, right? जो आपने collect किया है data, जो output में आ रहा है, either you want to print, you want to present on some Excel sheet sort of, you want to place it in some file, you want to present on web, or you want to plot anything, wherever you want to represent your data. So EDA, exploratory data analysis. So use the concepts of EDA or print your data or give the output. That's it. This is only the programming in Python or R language. Understood? So by using R language, now if you go and simply go and get into the simple linear language, what is linear regression in R, you will see the positive linear relationship or negative. As I have shown you, +1 or -1 nearby relationship identify hota hai, right? Same way, this is the mathematical terms to represent. अभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हुआ क्या, ये कहां से आया, ये कुछ नहीं है. ये देखिए, मैंने ये बाद में इसलिए खोला है. दिस इज द वे हाउ यू कैन गेट इनटू इट. ये वाला मेथड है, दिस इज द मेथड. इफ यू इंप्लीमेंट दिस मेथड,
this method is nothing but this is your linear regression, function. So mathematically in Geek for Geek, it is written how you represent your method, how you can go and identify the missing values or predicted values. So prediction is to be based on beta 0 plus. ये beta 0 पता क्या है? What is beta 0? Beta 0 है आपका जिसे आपने प्लस किया. प्लस किसको किया था? इंटरसेप्टेड वैल्यू को किया था ना. ये देखिए प्लस किया था और मल्टीप्लाई में हमने क्या डाला था? स्लोप इनटू एक्स. और स्लोप इनटू एक्स क्या है हमारा? है ना, स्लोप इनटू एक्स मतलब बीटा 0 था और बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स. So beta 1 multiply by x मतलब you already have the value of x. हमारा एक intercepted value आया था. So we got b1 into x plus e लिखते हैं अगर errors वगैरह के लिए. ठीक है, तो generally in case if there is any error we need to calculate where is that error all about. Got it? So हमारा already data है तो इसलिए हमने इसमें simple slope into x किया plus intercept point लिया and finally we executed this method. तो देखिए W3 स्कूल्स में पढ़ना कितना आसान है. सिंपल कोड है एंड आउटपुट भी साथ के साथ दे रहा है. लेकिन इसी को आप साइंटिफिकली पढ़ना चाहते हो, if you really want to go for it mathematically with theory, so for theory you can follow Geek for Geek. बस यही दो लिंक, दो रेफरेंसेस आप फॉलो करते जाएं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी. अंडरस्टूड? सो देखिए इसमें क्या बता रहा है, ये आ गया ना. देखिए इंटरसेप्टेड वैल्यू दैट इज बीटा 0. आपको इंटरसेप्टेड वैल्यूज निकालना है, आपको स्लोप वैल्यूज देखना है. दैट इज स्लोप वैल्यूज कहाँ मिलेंगे आपको? b1 है ना, एंड 1 यूनिट चेंज इन x. तो जो x की वैल्यू चेंज होगी यानी मल्टीप्लाई बाय x होगा विद द स्लोप वैल्यू ऑफ बीटा 1. तो यही तो हमने किया. स्लोप वैल्यू with the every value which is x value which is changing every time जो value change हो रहा है. तो ये हमने slope into x किया. this is our beta 1 into x plus intercepted point. तो intercepted point आपको इसमें यही लिखा है इसने. intercepted point कौन सा है हमारा? that is right beta 0. so intercept, what is intercept value? the value of y when x is 0 is represented as by b0. b0 बीटा 0 लिया. क्यों लिया? क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तभी. ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसको कंज्यूम मतलब अज्यूम करके इसको जब चले तो हमारे पास रिजल्ट आया ये. इंटरसेप्ट को हमने यहाँ पॉइंट ले लिया और वही सेम वैल्यूज हमने स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करा दिया x को. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन. थियरी में अगर आप ये लिख के आएंगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. बट अगर नहीं भी लिख के आएंगे एटलीस्ट कोड लिख के आइए. मेथड निकालने के लिए लिखना है तो ये बस मेथड लिख के आइए. पूरा डेटा लिखेंगे वेल एंड गुड, नहीं तो यू कैन इवन राइट दिस पार्ट. अप टू यू, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. सो this is the best practice along with the explanation. If you go with the explanation then further they also have the other example. एक example आपने पढ़ा cars का, एक ये है employee salary and their experience. तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए ना. लेकिन एक टाइम बाद भी बढ़ेगी. मतलब इफ यू रिटायर्ड, आपका एज 70 हो गया तो सैलरी बढ़ेगी? अरे सैलरी कहाँ बढ़ेगी, तब तक तो रिटायर ही हो गया होगा पर्सन. सो व्हाट इज द पैटर्न? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन अलोंग विद देयर सैलरीज? अगर ऐसा कोई पैटर्न है तो can we get some employees detail with their experience and their salary? तो HR वालों को ये सब कुछ निकालना होता है ना. तो इसमें क्या करेंगे? X values डिफाइन करेंगे, Y vectors डिफाइन करेंगे. ठीक है, ऑफ 10 टॉप 10 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास. तो हमने क्या किया? अब इसे R लैंग्वेज में डाल दिया. इसी को आप पाइथन में ले लो या इसी में आप R लैंग्वेज में ले लो. सो टुडे योर जॉब इज, आप R लैंग्वेज का कोड पाइथन में रन करवाओगे. मतलब इनका डेटा सेट को आप पाइथन में ले जाके काम करो और पाइथन का डेटा सेट को आर लैंग्वेज में लेके जाना एंड ट्राई टू वर्क एंड परफॉर्म. समझ में आ रहा है हाउ वी हैव टू डू? ये आपके पास ऑलरेडी मैंने कल आपको प्लेटफॉर्म्स भी बता दिए. आईडीज मैंने आपको दे दिए कैसे आपको अपने आईडीज को डिफाइन करना है. राइट? सो एवरीबडी प्लीज क्विकली स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज मॉडल्स. आप सबको इस पे काम करना शुरू करना है. अब ये देखिए आर लैंग्वेज का सिंटेक्स देख लीजिए.
इसमें डेटा डॉट फ्रेम, तो पहले डेटा फ्रेमिंग करनी है ना, डेटा कलेक्शन करना है, वो फाइनली किसमें रीडायरेक्ट होगा, इसमें रीडायरेक्टर सिंबल्स होते हैं, इक्वल्स टू नहीं डिफाइन करते, रीडायरेक्टर सिंबल्स होते हैं. So this is what you are going to create a data frame, data dot frame, जिसमें आप वैल्यूज पास करोगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल्स लाइक एक है ईयर एक्सपीरियंस विच इज इक्वल्स टू, इन्होंने एक ईयर एक्सपीरियंस को एक सी बेसिकली एक एरे फॉर्म में डिप्लॉय कर दिया, और एक कॉमा, कॉमा लगाने के बाद एक सैलरी वेरिएबल डिक्लेयर किया इक्वल्स टू सी, और उसमें सबकी सैलरीज डिप्लॉय कर दी. और ये सारा, ये दोनों वेरिएबल्स, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है इन अदर वे, राइट. ये सारा का सारा डेटा क्या किया, डेटा फ्रेम नाम के क्लास के थ्रू, मेथड के थ्रू इसको परफॉर्म कर दिया, और ये सारा का सारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, वर्ड डेटा से. सो अंडरस्टूड हाउ वी कैन कलेक्ट द डेटा. दिस इज आवर लैंग्वेज. बताओ इसमें क्या मुश्किल है. और यही वैल्यूज आप उठा के लिस्ट में डाल दो पाइथन में, ये रहा एक्स वैल्यू, इसकी ये वैल्यू हटा के, इफ कांट यू डू दिस, ये वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यूज हटा के, कांट यू प्लेस दीज वैल्यूज, ये वाली कॉपी और पेस्ट ही तो करनी है. सो ट्राई टू डू दिस, एंड फर्दर वी हैव अ स्कैटर प्लॉट्स. सो स्कैटर प्लॉट बनाएंगे तो वही ऐसा पॉइंट्स बन जाएंगे, स्कैटर प्लॉट आ जाएगा. अब प्लॉटिंग कैसे करनी है, इसमें सीधा मेथड है प्लॉट. सो प्लॉट क्या करना है, डेटा में से ईयर्स को, ईयर के एक्सपीरियंस को कॉमा, तो ईयर्स आप रख रहे हैं, ठीक है, कहां पर, ईयर्स रख रहे हैं आप एक्स एक्सिस में, और सैलरी रख रहे हैं आप किसमें, वाई एक्सिस में. तो ये रहा वाई एक्सिस में सैलरी है ना, और एक्स एक्सिस में आपने क्या रखा, उसके एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स. इसमें आप एक्स लैब, लेबल, लेबलिंग कर सकते हो, लैब मतलब लेबल, एक्स का लेबल, वाई का लेबल, जो आपने लेबलिंग करा ना, ये सैलरी और ये लेबलिंग कर सकते हो. एंड मेन, मेन क्या है, मेन में ऊपर आपने जो हेडिंग देनी है, दैट्स इट. ये बनाना है तो आपका पूरा प्लॉट तैयार हो गया. तो आर लैंग्वेज तो कई बार आप देखोगे, आर लैंग्वेज और आसान है. सो फॉर योर MCSL 229 कोड सेम है, रिग्रेशन ही करना है. डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में मेथड सेम है, लीनियर रिग्रेशन, लेकिन पाइथन में आपको अलग तरीके से पढ़ना है, तो उसका कोड, मतलब कंसेप्ट सेम है ना, कंसेप्ट थोड़ी बदलेगा, सिर्फ सिंटेक्स ही तो बदलेगा. सो देयर वी आर यूजिंग स्काईपाई, जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन में डायरेक्ट वैल्यूज डाल के उसके वेरिएबल्स जनरेट करते हैं, और प्रेडिक्शन के लिए अपना खुद का मेथड बना दिया. और यहां पर आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग टू प्लॉट द वैल्यूज. ये रहा प्लॉटिंग करा हुआ है, इसमें भी आप अपना मेथड बना सकते हो, ऐसा नहीं है, बट फॉर दैट यू नीड टू लर्न द वैल्यू. अब ये देखो, इसको पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आता है वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ देना आप, लेकिन अपना वो जरूर करना कि कैसे आप इसको प्रेडिक्ट करोगे, राइट. हाउ यू कैन गो एंड गेट इनटू द प्रेडिक्शंस. तो ये देखिए, इंस्टॉल किया पैकेज, कार टूल्स, लाइब्रेरी ले लिया, डेटा स्प्लिट कर दिया, रेशो ले लिया, है ना, अलग अलग डेटा सेट्स हैं, और उस पर आपने लीनियर मेथड लगाया और वैल्यूज पास करी और उसको प्रिंट कराया, समराइज किया, तो ये आता है इंटरसेप्टेड वैल्यूज. कौन सी इंटरसेप्टेड वैल्यू निकली है हमारी, ठीक है, आपका एरर्स कितने हैं, एरर्स की वैल्यूज क्या हैं, और सबकी एक डेटा सेट निकल आएगा, ठीक है. तो उसके बेसिस पे आप रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई कीजिए, और कुछ मेथड्स हैं वो रन करके देख सकते हो आप. हाउ टू प्रेडिक्ट, तो प्रेडिक्शन के लिए ये रहा प्रेडिक्शन का मेथड. सो प्रीडिक्ट मेथड ही है, प्रीडिक्ट, उसमें बस डेटा सेट डाल दीजिए और सैलरी आपको प्रेडिक्ट हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी. तो अगर आपने जो भी वैल्यूज डाली, 3 वैल्यूज डाली कि अगर ये 3 वैल्यूज का मुझे प्रेडिक्शन करना है, न्यू डेटा आया, तो न्यू डेटा का प्रेडिक्शन कैसे करें, वहां पे बना बनाया मेथड है प्रेडिक्ट, आर लैंग्वेज में. आपका एग्जिस्टिंग डेटा सेट कॉमा न्यू डेटा सेट आपने डाला, और उसके बेसिस पे वो अपने आप प्रेडिक्ट करके आपको उसकी नई प्रेडिक्टेड सैलरीज आइडेंटिफाई कर देगा और प्रिंट कर देना. तो पहले वेरिएबल के लिए 4 पॉइंट के लिए, जिसका वो है एक्सपीरियंस 4 इयर्स, तो उसकी सैलरी ये होनी चाहिए. जिसका एक्सपीरियंस है 4.5 इयर्स, उसकी ये होनी चाहिए, और जिसका 5 है उसका ये होना चाहिए. So this is the way how you can go for the predictions, and you can find the slopes, and उसके according
सो सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस आपका चार्ट आ जाएगा. सो यू कैन जनरेट द आउटपुट. इसी को प्लॉटिंग कर दिया है ना. तो प्लॉटिंग करने के लिए जी जी प्लॉट नाम की लाइब्रेरी यूज की है इन्होंने. सो ये आर लैंग्वेज में है. तो आपको करना क्या है, आपको करना है प्रैक्टिकली यू नीड टू कॉपी. पहले तो रिग्रेशन समझिए, व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाई वी आर यूजिंग इट. सेकेंड, आपको ये सीखना है कि आप पाइथन में या आर लैंग्वेज में कैसे इसको प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस करने के लिए पाइथन का तो मैंने आपको ये कोड बता ही दिया, W3 स्कूल्स, या आपको जुपिटर इंस्टॉल करवा दिया मैंने. सेम वे में आप आर लैंग्वेज के लिए भी कर सकते हैं. W3 schools say for R language. Okay, so you can go for W3 schools R language. ये देखिए R language का पूरा कोड. अब R language का सिंटेक्स पढ़ना है, समझना है, तो कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी. तो आज का आपका पूरा काम R language अच्छे से पढ़ लीजिए. ये आपके MSCL 229 डेटा साइंस के का पार्ट है. सो लूप कैसे लगाते हैं आर लैंग्वेज में, कंडीशंस कैसे लिखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ग्राफिक कैसे बनाना, स्टैट्स के मेथड कौन से हैं. ठीक है, तो ये सब बेसिक एग्जांपल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे. अंडरस्टूड. तो इट्स वेरी इजी टू गो फॉर इट. आज आपको आर लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ने हैं फ्रॉम W3 स्कूल्स, राइट. इसी का रन करके यहीं पे आप रन भी कर सकते हो. तो even you are working on mobile and you are on roaming or in office or anywhere, you can, without installation on your laptop, simply you can go write the code, try it yourself, click on the button called try it yourself, and you will get the output. Is that clear? हाँ सर. Great. तो सबसे पहले रिग्रेशन एल्गोरिथम्स अच्छे से कर लीजिए. इसके बाद अभी तो मैंने सिर्फ एक रिग्रेशन एल्गोरिथम बताया, लीनियर. फिर है पॉलिनोमियल, फिर है मल्टीपल रिग्रेशन. इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं W3 स्कूल्स में. ठीक है, तो हर एक एल्गोरिथम का पर्पस अलग है, मतलब अलग है. लेकिन एक बार आपने अगर बेसिक लीनियर रिग्रेशन ठीक से कर लिया तो बाकी इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा. और तभी हम ट्रेन टेस्ट मेथड्स पे जाएंगे, मॉडल को ट्रेन टेस्ट करेंगे मशीन लर्निंग के केस में. यानी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, योर बेसिक एल्गोरिथम्स आर सेम. ठीक है, लैंग्वेजेस इट्स ऑल योर चॉइस, और एज पर द इग्नूस नॉर्म you should follow either R language or Python language. Both are well designed languages, especially for analytical purpose. So whenever you are into the analytics, you can either use Python or R language. Syntax is very very easy, so there is no such difficulty. Okay, quite easy job to get into it, right? And now once you are through with that, you will find now polynomial में हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्लोप लाइन बदल जाता है. तो स्लोप लाइन बदलता है तो अब आपको समझ में आएगा ना, तो ये कौन सा बेटर है. ठीक है, अकॉर्डिंगली इसमें आपने मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर लिया, जिसमें कहीं पैटर्न, रेगुलर पैटर्न नहीं था, है ना. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक रेगुलर पैटर्न नहीं था. अब आपने अपना स्लोप को बदल दिया अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स, और उसका जो भी बेस्ट रेलेवेंट पॉइंट्स निकले आपने उसके अकॉर्डिंग उसका स्लोप तैयार किया. सो दिस इज पॉलिनोमियल रिग्रेशन. और इसमें भी आउटलायर्स मिलेंगे. ये आउटलायर्स की वजह से ये बेचारा इतना नीचे आया और वो आउटलायर बन गया. अगर ये पॉइंट नहीं होता तो शायद ये पॉइंट इसको टच कर रहा होता, ये कर्व यहीं से मुड़ जाता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये पॉइंट एक अलग है, ये पॉइंट एक अलग है. तो ये स्ट्रेस करते हैं आपके लूप्स को और आपकी वैल्यूज को. तो डिपेंड करता है ये पॉइंट क्यों है. तो आउटलेयर्स आइडेंटिफाई करना चाहिए. व्हाई दिस आउटलेयर एंड व्हाई दिस आउटलेयर. वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, एक अलग बात है. सो दिस इज अनदर स्टेज कॉल्ड पॉलिनोमियल रिग्रेशन. बट पहले लीनियर को अच्छे से कर लीजिए, पाइथन में भी कीजिए, आर लैंग्वेज में भी कीजिए. क्विकली ये सब कीजिए फटाफट. और फिर मल्टी रिग्रेशन जिनका हो जाए वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन कीजिए. जल्दी से कीजिए, डोंट वेस्ट टाइम. एंड आफ्टरवर्ड्स विल स्टार्ट विद द अदर पॉइंट्स. आज हमें ट्रेन टेस्ट मेथड्स, डिसीजन ट्री,
और ये बहुत सारे हमें एल्गोरिथम्स के ऊपर स्टडी करना है. अंडरस्टूड? तो प्लीज क्विकली गो थ्रू विद दैट एंड अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू चेक योर परफॉर्मेंस, है ना. इस तरह से आप निकाल सकते हो. इनका रिलेशनशिप कितना है? 76% रिलेशनशिप है. मतलब ये डेटा इतना भी अच्छा नहीं है. 76% ये रिलेशनशिप. एक्यूरेट डेटा कितना मिलेगा? 96, 95, 92, 98% अगर है, सो दैट इज गुड टू गो, बिकॉज वो रिलेशनशिप अच्छा है. यानी वो डेटा, वो एक्स और वाई का रिलेशनशिप है, उसमें एक पैटर्न है. पैटर्न का रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कैसे करें? न्यूमेरिकल फॉर्म में. ये मेथड्स हैं. सो रिग्रेशन इज अ वंडरफुल एल्गोरिथम्स सो दैट यू कैन गेट इनटू इट एंड परफॉर्म. पता है इसमें तो हम लोग बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स भी देते हैं. ठीक है, हमें इनको अलग अलग डेटा सेट और एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज भी बना के देते हैं. बट आप एटलीस्ट इग्नो में आपको इतना ज्यादा आप जाएं तो बहुत अच्छी बात है. व्हाई नॉट? देखिए, एजुकेशन का कभी एंड नहीं होता. But first you understand all the regressions and then you decide which regression is best for your data set in your company, right? And try to generate the reports on that basis. और अब आपकी कंपनी का डेटा होगा तो आप W3 स्कूल्स में थोड़ी डालोगे. That's why I taught you yesterday. Please go through with the Jupyter and our platform on your Docker interface. राइट, गो फॉर कंटेनराइजेशन. अपना खुद का डॉकर रखिए, अपना खुद का आईडीईज रखिए. आप आर स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं या आर का इंटरफेस यूज कर सकते हैं जो बेस है, एंड यू कैन राइट योर कोड एंड रन योर कोड. ठीक है जी. सो क्विकली कंप्लीट कीजिए. आई एम ऑनलाइन. इफ यू वांट एनी सपोर्ट प्लीज लेट मी नो. सो प्रैक्टिकल्स क्विकली फिनिश कीजिए. इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? Yes, sir. Perfect.